Exercise 7.1, question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPP. Show that triangle DAP congruent to triangle EBP and second point AD equals to BE. So in the beginning, we have written given AP equals to PB because it was mentioned P is the midpoint. If P is the midpoint, it means this side is equals to this. Then second point, they have given angle BAD. BAD means this angle is equals to angle ABE. Third point, EPA angle. EPA means this angle is equals to DPP. In a question, they have mentioned I need to prove congruency between triangle DAP and EPP. We can easily see we have got 2 points. ये दो एंगल इक्वल आ गए, ये साइड इक्वल आ गई, बट जो थर्ड एंगल है इनकम्प्लीट आ रहा है. अगेन वी आर नॉट गेटिंग APD, पूरा एंगल नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा पार्ट दूसरे वाले ट्राइंगल के थोड़े से पार्ट के इक्वल है. फॉर दैट इन द बिगनिंग सो राइट डाउन एंगल EPA is equals to angle DPP. जो भी एंगल मिसिंग है you have to write down at angle EPD both sides. Then I will write down EPA plus angle EPD is equals to DPB plus angle EPD. If I am adding EPA, this angle with EPD, it means I am getting this complete angle. So on left side, I will write down APD. जब आप ऐड कर रहे हो DPB में EPD ऐड कर रहे हो तो आपको ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है. Then I will write down on right hand side EPB. आपको ऐड करने पे पूरा एंगल मिल गया. नाउ मार्क दिस एज ए फर्स्ट इक्वेशन. फिर लिखिए इन ट्राइंगल DAP, दूसरा ट्राइंगल EBP and mention equality parts. AP equals to PB was given. Second point, angle BAD, or I can write down PAD. It's same thing. Equals to ABE. ABE, instead of that I can write down PBE. Again given. Third point, angle APD is equals to angle EPB. Reason आप लिखोगे by first equation. Now we have got 3 points of equality. Then I will write down triangle DAP congruent to triangle EBP. And to write down criteria, focus on one triangle. You got this angle, side, and again this angle. So I will write down by angle, side, angle. AD equals to BE. आप देखो यहाँ पे AD आ रहा है, EBP मेंशन हेयर EBP. AD आपका आ रहा है और EB आ रहा है.
and it is coming in the figure also. So I will write down DA equals to BE by CPCD. ये हमारे corresponding parts हैं congruent triangle के. So I can write down DA equals to BE. जैसे ही आपने congruency proof की तो उसके सारे angles और सारी sides equal हो जाते हैं.